अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। फ्राइडे फेस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा सीजन 3 के आज के एपिसोड में आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। आप सोचते होंगे कि हर एपिसोड से पहले अपने इंट्रो वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। ये बात तो सच है कि मैं हर एपिसोड से पहले बोलता हूं, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे हर एपिसोड में हम बहुत छानबीन करके, बहुत रिसर्च करके गेस्ट को आमंत्रित करते हैं और हर एपिसोड में आपसे एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आपके लिए अगले एपिसोड में क्या स्पेशल लेकर आया जाए, इसलिए मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये हर एपिसोड स्पेशल होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो पर्सनैलिटीज हमारे साथ जुड़े वो एक नए आयाम को, एक नए पर्सपेक्टिव को आपके साथ शेयर करें, जिससे आपका भी लाभ हो, आपकी जानकारी बढ़े, हमारी भी जानकारी बढ़े और फूड इंडस्ट्री की दुनिया से हम कुछ अजीब रोचक बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं लेकर आए। तो आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल क्यों है? मेरे हिसाब से आज का स्पेशल जो एपिसोड है वो कई किस्म से विशेष है। सबसे पहले, मेरे शो को चलते हुए 2 साल से अधिक हो गया, लगभग 70 एपिसोड्स हम कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी एपिसोड में एक साथ 3 पर्सनैलिटीज, 3 गेस्ट नहीं आए। तो ये पहली बार हो रहा है कि हमारे शो में एक साथ 3 सुपर वुमेन अचीवर्स आज हमारे साथ यहां जुड़ेंगी। दूसरा, 16 जुलाई यानी कि 2 दिन के बाद वर्ल्ड पीआर डे है, वर्ल्ड पब्लिक रिलेशंस डे। अब वर्ल्ड पब्लिक रिलेशंस डे से हमारा क्या संबंध है, आप ये जरूर पूछना चाहेंगे, तो मैं ये बता दूं। पहली बात तो ये कि मैं करियर के शुरुआत में मैं खुद भी एक क्वालिफाइड पीआर प्रोफेशनल रहा और फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड पीआर का एक विशेष स्थान है। अनसंग हीरोज हैं जो बिहाइंड द कर्टन्स और बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, कभी सामने नहीं आते हैं, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़ी चेन्स इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए और कई किस्म के रिलेटेड ब्रांड प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन रिलेशन मैनेजमेंट के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने सोचा कि वर्ल्ड पीआर डे के उपलक्ष्य में आज इस एपिसोड को पीआर प्रोफेशनल्स को डेडिकेट किया जाए, इसलिए हमने 3 चुनिंदा, एक्चुअली 4 करने थे, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से 3 चुनिंदा पीआर प्रोफेशनल्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो दिल्ली, एनसीआर और देश भर में बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, मिशेलिन स्टार शेफ्स को हैंडल करते हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स को हैंडल करते हैं, चेन्स को हैंडल करते हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा कई और ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं। तो आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे अश्मिता लुक्टू। अश्मिता लुक्टू शिमला से बिलोंग करती हैं, आजकल दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग करी हुई है इन्होंने, कंप्यूटर साइंस में। इनकी फैमिली जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली है। इनकी फैमिली में सब आईएएस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट पोस्टिंग्स में है और ये हैं पीआर में क्योंकि इनको शुरू से ही स्टेज का और डिबेट का शौक था। इन्होंने लंदन में भी 2 इवेंट्स क्यूरेट किए। ये गवर्नमेंट में बहुत ही उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ भी गवर्नमेंट असाइनमेंट्स में काम करती हैं और इनकी एजेंसी का नाम है GWA कम्युनिकेशंस। दूसरी गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगी वो है नेहा बहल। ये मेरे को बड़ा मजा आता है बोलने में, साड़ी दिल्ली की कुड़ी है। इन्होंने एमबीए मार्केटिंग और एचआर में किया है। देखिए, मैं एचआर वाला हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई एमबीए एचआर वाला फूड इंडस्ट्री से मिलता है। 8 साल हो गए लगभग इनको अपनी एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी यहाँ चलाते हुए। इसका नाम है क्यूब कम्युनिकेशन। अपनी करियर के शुरुआत में इन्होंने एक पीआर एजेंसी के साथ काम किया और उसके बाद ये अपनी एजेंसी चलाती हैं और शुरू के दिनों में दूरदर्शन पर न्यूज़ एंकर का काम भी किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी किया। ये भी मिशेलिन स्टार शेफ्स को मैनेज करती हैं, रेस्टोरेंट्स को मैनेज करती हैं, होटल्स को मैनेज करती हैं और इनकी एजेंसी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगी सोनाली प्रिय कपूर। ये भी दिल्ली गर्ल हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है, ये भी दिल्ली की कुड़ी है। इनकी एजेंसी का नाम है द हैच प्रोजेक्ट और ये अपनी एजेंसी को एक कंपनी की तरह से रन करती हैं और ये उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो बॉस हैं अपनी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अंडर 40 जो 40
अचीवर्स का अवार्ड था, इनको इकोनॉमिक टाइम्स ने वो अवार्ड दिया। 2 डिकेड्स का लगभग एक्सपीरियंस है और इनका टोटल एक्सपीरियंस, जितनी टीम इनके साथ काम करती है, शायद 60 साल के ऊपर एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है। ये आप ब्रांड का नाम लीजिए, उस प्रेस्टिजियस ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके सारा मैनेजमेंट करती हैं ब्रांड का और कम्युनिकेशंस का। तो इससे पहले ये तीनों हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और एकदम उत्सुक हैं आप लोगों से बात करने के लिए। हमारी ये परंपरा है कि हम उनको लाने से पहले उनकी एक झलक आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, हमने इनसे कुछ तस्वीरें मंगवाई थी जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये लोग करते क्या हैं अपने फ्री टाइम में। तो इनकी एक झलक आपको दिखाते हैं और फिर एक एक करके इनको आपसे मिलवाएंगे केवल कुछ क्षणों के बाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है इनकी एक झलक। तो ये थी एक झलक इन तीनों हमारे आज की पर्सनैलिटीज की। अब मैं इनको आपसे परिचय करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अश्मिता लुक्टू। अश्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इनफैक्ट इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन मैंने बहुत टाइम से सुनी नहीं है अपने लिए। जनरली मैं रिसीविंग एंड पे नहीं होती, आई एम मोर ऑन द गिविंग एंड, बट दिस इज वेरी स्वीट। आई वाज स्माइलिंग, आई वाज ग्रीटिंग विद ऑल स्माइल्स। चलिए, हम आज थैंक यू अश्मिता। और मैं आज के दूसरे मेहमान को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये है नेहा बहल। थैंक यू नेहा, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच राजेश जी, इट्स अ प्लेजर एंड ट्रस्ट मी, इतना एक्चुअली अश्मिता ने बोला इतना स्वीट इंट्रोडक्शन, आई वाज लाइक स्माइलिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड इतना स्वीट। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है जब कोई मेरी तारीफ करते हैं ना, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। आशीष चांदना लिख रहे हैं, नेहा बहल मैम के बेटर हाफ नीतीश झा ब्रो का हेयर स्टाइल बहुत बहुत फेमस है। तो लीजिए, आई थिंक वो अब मुझसे मैं ज्यादा लेके फेमस है। अब हमारे साथ जुड़ेंगी सोनाली प्रिय कपूर। सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you so much, Rajesh ji, for having me over. And very truly said by Ashmita and Neha, this crackle which you had put now and the way you have introduced us, this is so pleasing. Like we literally are the ones who are introducing people. But it was so nice to hear that, yes, we have been doing some great things around. Thank you so much for having us over, Rajesh ji. देखिए, आपने एक क्यू मेरे को दिया दैट वी आर डूइंग सम ग्रेट थिंग्स अराउंड। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप लोग सबको इंट्रोड्यूस करते हो और आपको इंट्रोडक्शन कोई नहीं करता। तो आज हम चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने आप फेस करें और जो आप अपने ब्रांड और लोगों के क्वेश्चंस के साथ उनके क्वेश्चंस को उनके सामने खड़ा कर देते हो। तो आज हम क्वेश्चंस आपसे करने वाले हैं, तो थोड़ा संभल के। एंड मेरी ये एक परंपरा है कि मैं गेस्ट के आने से पहले उनकी शान में एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी आज तमन्ना थी कि जब आप लोग सामने आ जाएं तो मैं तब शेर पढ़ूं। और पहली बात तो ये है कि इतना ग्लैमर आज तक मेरे शो में कभी नहीं आया, पहली बार है कि इतना ग्लैमर, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। लेकिन मैंने ना आप तीनों के इंट्रोडक्शन में अपनी फोटो साथ में इसलिए लगाई कि मैं सबको बता सकूँ कि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको मिला हुआ हूँ, तो थोड़ी मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैं आप लोगों से जब भी मिलता हूँ मेरे दिमाग में एक ही शेर, ये 2 पंक्तियां आती हैं और जो आप लोगों तीनों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फिट बैठती हैं। शायर ने कहा है कि हर उस शख्स की ज़ुबान बंद करनी है, हर उस शख्स की ज़ुबान बंद करनी है जिन्होंने कहा था तुमसे ना हो पाएगा। आप लोगों ने वो कर दिखाया है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि तुम्हारे बस की नहीं है, लेकिन आज जो आप हो अपने बलबूते पे हो, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। तो Thank you so आज much, Rajesh ji.
वी विल स्टार्ट एंड मैं सबसे पहले हम लोग मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि वी विल लाइक टू, हमने इंट्रोडक्शन भी अल्फाबेटिकली करी, अश्मिता, नेहा एंड देन सोनाली। मेरे लिए तीनों गेट्स एकदम बराबर हैं और तीनों की अपनी अपनी एक डिस्टिंक्ट स्थान है, कहीं कुछ ऐसा कुछ जूनियर सीनियर वाली बात नहीं है, आपस में फ्रेंडशिप है। लेकिन एक ऑर्डर करने के लिए हम अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। तो अश्मिता, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप ये मुझे बताइए कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी शिमला में गुजरी और शुरुआती ज़िंदगी में आपने क्या क्या किया, पीआर क्यों चूज़ किया, और ये हॉस्पिटैलिटी पीआर में आने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया। ये क्वेश्चन मेरा आप तीनों से है, तो मैं पहले अश्मिता से स्टार्ट करता हूँ। सो राजेश जी, शिमला में ऐसा कोई पीआर दूर दूर तक नहीं है, बट मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने पापा को देखती थी कि लोग उनसे मिलने आते थे बात करने के लिए, उनके जो भी जिस जगह भी वो चीफ गेस्ट बन के जाते थे, चीज़ें करते थे, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड। एंड वो बहुत अच्छा उनका वार्तालाप बहुत ही मीठा प्यारा और बहुत ही सुलझा हुआ था। सो मैंने उनसे ये चीज़ें पिक की। मेरे भैया बोर्डिंग स्कूल में थे तो उनसे भी बहुत कम, जब भी वो घर आते थे तो मैं पिक करती थी कि अच्छा ये हुआ है वो हुआ है। एंड मुझे बचपन से शौक था न्यूज़पेपर उठा के जोर जोर से पढ़ने का, कि मेरे पेरेंट्स को लग जाए कि ये आगे जाके वो टीवी पे 9 PM का दूरदर्शन पे आती थी तो ये वही बनने वाली है। और बस बचपन से ही डिबेट्स शुरू हो गई, डेक्लेमेशंस हुआ, मोनोलॉग्स हुआ। मुझे स्टेज से बहुत प्यार था, आज भी है। स्टेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है लाइफ में। कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है मेरे अंदर कि कुछ भी हो जाए मैं जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, एंड वॉट एवर वेर एवर आई एम टूडे इज मोर लाइक कि ठीक है कर लिया, क्योंकि खुद पे वो विश्वास था कि हो जाएगा। सो बस वही क्या, उसके बाद स्कूलिंग हुई, इंजीनियरिंग हुई, पर मैंने अपना ये कॉर्ड नहीं तोड़ा विद पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, और चाहे वो नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, इंटरनेशनली हो, मैं सब करती थी और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, आज भी हैं। एंड वन थिंग लेड टू द अदर। ऑफ कोर्स मैं फिर इंजीनियरिंग पढ़ी क्योंकि मुझे था कि अगर है ही कुछ पढ़ने को तो चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की काम भी किया, पर मेरा दिल हमेशा से इधर ही था। एंड देन वन फाइन डे थिंग्स टुक अ टर्न एंड ये हो गया। मेरी शुरुआत लंदन से हुई थी। लंदन के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से मैंने काम करना शुरू किया था, एंड वहाँ के बहुत ही मानी शेफ्स हैं, यू नो, बी शेफ दीपना आनंद और समीत नेजा और a lot of रेस्टोरेंट जो वहाँ हैं उनके साथ आई हैड स्टार्टेड कि ओके यू नो मेरा बेस यहाँ से बनेगा। बट इंडिया में आई वाज, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि यहाँ की कैसे फंक्शनैलिटी होती है, चीजें कैसे होती हैं। आई न्यू कि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल हु आर यू नो रूलिंग द स्पेस हियर, और मुझे नहीं घुसना उस जगह पे टू यू नो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट इफ देयर इज वन पर्सन दैट आई कैन से हु taught me the nuances of how things work and how quality is delivered, and it, you know, always go for quality over quantity, और जो भी करो सब्सटैंशियली करेक्ट करो, हैज टू बी सम्राट बैनर्जी। सो वेरी गुड, that is the sole reason that I entered hospitality. नेहा, आपकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बताइए कि हाउ पीआर हैपेंड और ये हॉस्पिटैलिटी पीआर में कैसे आया। वेल आई वुड से जब मैं स्कूल में थी तो मैं हमेशा से एक्चुअली बचपन से ना आई वांटेड टू बी अ टीचर। मतलब मुझे और कोई प्रोफेशन पता ही नहीं था, बिकॉज हमारी फैमिली में या तो इंजीनियर था या कोई टीचर था या कोई गवर्नमेंट सर्विस में था, तो मैंने यही समझा था कि मैं तो टीचर ही बनूंगी। बट आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली। आई वाज इन 11th and one of our assignment was happening in the class, and our English teacher Shruti ma'am,
she gave a very interesting assignment to us on advertisement. Hmm. We had to Okay. design one advertisement, Huh. and so my advertisement was the best in the whole class. And she called me up and she said, beta, what do you want to pursue further after 12? I said, ma'am, kuch nahi, I'll take BCom या BA जिसमें admission मिल जाएगा, and later I wanted to be a teacher. Huh. She's like, अच्छा, but why? I said, ma'am, why का तो पता नहीं, but this is the only thing that I wanted to do. She said, why don't you opt for journalism and mass communication? Huh. Huh. I said, ma'am, I haven't heard about it. I have to see. So she said, आप अपनी research करनी शुरू करो, because I'm telling you, you are good. Hmm. Then obviously 12th, 12th में एग्जाम दे लिए, सब कुछ हो गया, पेरेंट्स ने पूछा गुड परसेंटेज एंड एवरीथिंग. तो आई सेड दैट आई वांटेड टू बी मास जर्नलिज्म. माय माय डैड वाज लाइक, मतलब क्यों? बिकॉज Huh. उनके लिए जर्नलिज्म का मतलब था कि क्राइम, Hmm. the crime stories that you Yeah, read yeah, and yeah. everything, the political news that you see, वो उनका बेसिक क्राइटेरिया था. बस जर्नलिज्म में इतना ही होता है. Then I told them that I Huh. wanted to be on the camera. I wanted to be in, like, I wanted to have my name in the paper and everything. वो मुझे सब चाहिए. तो Hmm. उनको लगा कि क्योंकि मैं स्कूल में बहुत एक्टिव थी, मैं आई थिंक आई वाज द मोस्ट एक्टिव चाइल्ड. अगर मैम बोलती थी कि हमें क्लासरूम में टेप चाहिए तो कौन लाएगा, तो मेरा हाथ खड़ा होता था. मतलब हर चीज में, डांस में पार्टिसिपेट Huh. नेहा के आई थिंक टीचर्स की. आप कुछ नहीं, उसके बाद मैंने पापा को बताया. पापा ने बोला ठीक है, हम रिसर्च करते हैं कोर्स के बारे में. व्हेन हम्म. आई जॉइन जर्नल, yes, when I joined journalism and mass comm, हम्म. so I think that time it was only 7-8 institutes. या वो बेसिकली कोर्स करवा रहे थे. आई लकीली गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट जस्ट वाह. बिकॉज ऑफ द कॉलेज, की कॉलेज बहुत दूर था. एंड आई कम फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली जो बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं अपनी बेटियों को लेके. तो दे वर लाइक, नहीं नहीं, इतनी दूर तो भेजेंगे नहीं. Then I हाँ. ended up taking admission in a private university, which is a good university, GGS हाँ. IP University, and I did my course. I was exploring various fields in journalism and mass comm. I started my obviously journey with Doordarshan, as you said, as an interview expert. I was on the camera. हम्म. I have done training in Hindustan Times. I've been on the radio also, FIU 104 FM. हम्म. Then I did my activity in UTV also. But then PR was unexplored thing. I really wanted to हम्म. explore. देखना था कि PR में होता क्या है. Because या शुरू से ही communication level मेरा बहुत अच्छा था. I want to हम्म. see कि whether I can perform in this field or not. And luckily, I started as a PR executive with Educom, which is a big हम्म. company. I started from there. I joined some agency. I gained some experience, and वहाँ पे थोड़े बहुत food के clients आए. Food was really interesting for me because खाना देखने में जितना अच्छा लगता है, उसके लिए काम करना और भी अच्छा लगता है. उसके लिए इवेंट्स क्यूरेट करना, उस रेस्टोरेंट के लिए, शेफ के लिए काम, इवेंट्स क्यूरेट करना और भी इंटरेस्टिंग होता है. हम्म. अगर आप राइटिंग कैपेसिटी भी देखेंगे फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हम्म. it's not a very dull, very, या it is plastic, you can write it like that way. So I think wahan se it happened that I entered into the PR field, and yeah, I think that was the area where I started enjoying at least the PR field. वाह. वाह. सोनाली, नाउ वी कम टू यू. आपकी स्टोरी क्या है कि शुरू से बचपन में दिल्ली में आपका सब बचपन रहा और यहीं पली बड़ी, तो पीआर कब आया और हॉस्पिटैलिटी पीआर कैसे आया? So it is quite strange that it is somewhat similar to a few plugins of Ashmita's life and Neha's life. South Delhi girl belonging from a typical Punjabi Kapoor family. Khana is the main subject of life. Like we are having breakfast, we discuss that what we have to have dinner, हाँ. and the Punjabi flavors where you have to really marinate and keep it overnight. Matlab, it's not just the chef's curation. It is like ghar ka हम्म. khana and ghar हम्म. ka
every masale and even garam masalas, everything roasted at home. So our upbringing is with the flavors, with the nostrils being clear with that. So Uh, understanding of flavors are very clear. I'm a first generation entrepreneur, belonging from a service class family, pampered kid. Never even knew when I started my career that I have to do PR. I hmm, just wanted to dress up and go out, knocking the heels on the ground. That is it. My objective was so clear. My uh, mother wanted me to be a teacher. She got uh, me the teacher's training, every jazz done. I was teaching in DPS Mathura Road, and one fine oh, day, standing at the bus stop in the morning, I realized that I can't get up in the morning for the rest of my life. Only just I yeah. have fancy of wearing a sari and going to work. No. I left the job, I applied, I got through with Lilliput Kids Wear, and my job, which was being given to me, was to send customer care letters. We Hmm. missed you at our outlet. They were just three outlets. Okla was the office. And I believe, like, I was fortunate because of being the inquisitive soul. I took Hmm. initiative. Advertising was something that was coming. The company was growing. Hmm. From two outlets, they turned into 12 outlets. And then, because taking initiatives, they also realized, and from 12 outlets to opening 102 outlets across Pan India, taking care of the whole brand communication and brand planner. So that was also majorly onto advertising and marketing, like, what people really Yeah. define what ATL, BTL is. That was what the early thing was. But then after that, it started evolving. I started working with Franchise India again, Ghar ke paas, that was the connect. And Huh. there is where, so first was retail apparel to look at, of building a brand and expansion to look. My first exposure was that, from being a customer care executive turning into a marketer and advertiser, and also taking care of the whole brand positioning. At a very young age, I could do this because I wanted to dress up and just roam around. That was my objective to look at. Until that time, PR was not there. But then, all this while, because I started talking to people, and I started realizing this thing, that what is it that is common? So, Hmm. in all of this, I used to go for morning walks. South Delhi girl, Lodi Gardens. Like, I used to go with my father for the Uh, morning walks, and there used to be this one line. Whenever I used to meet his friends, and they used to say, "One, you look alike a lot to him, but तुम्हारे पापा से जो मिल लेता है ना, वो उनको भूलता नहीं." hmm. This one line, it was said in a very subtle way, nothing different, nothing fancy. And it just hit me so hard, that what does my father do that people don't forget? Huh. That one thing which got engraved to me, and when I was between my job switch also, there is where actually PR happened. I'm not a mass comm student. I have Hmm. never worked with an agency. I have never worked in an agency. And I'm running an agency. And this month, as we speak, this year, we celebrate 5 years, sir. Wow. And I don't have a partner. I'm a first generation entrepreneur. When I was told to get settled, I opened a company. It Hmm. was just because the industry exposure which I happened to give to myself was retail and retail hospitality. I was, as everyone knows, I was after Franchise India. I got opportunity to work very closely, choosing the priorities right. I took hospitality, where Hmm. it was retail apparel and retail hospitality, India and UAE communications to look at. I chose onto hospitality, and Dabur happened, Dabur India. There is where I met Zorawar Kalra, Okay. and rest is history. Rest is really history for Yes. me. Yes. So starting from the name concept of Punjab Grill to doing bow tie, it's been nearly a decade of an experience of learning from the master and the legendary Jixkalra, who literally taught the essence and the DNA of the flavors. Like, I think we were not even born when he did tempura fried prawns, Yes. in the Yes. time of 82. So Uh, too much of knowledge, which has been imparted. And then with Ravar, there was a lot of motivation which was there, which uh, actually he used to be on the panels, and I used to just sit and listen. That is everything going fine or not? And there were times when he was raised questions, and he mentioned this thing. I'm not going to answer this much, otherwise my colleague is going to start become one.
And earlier I used to take it like a joke, but then I was like, does he really mean it? Like, does he really see that in me? Because I have no idea. I never ever thought I will open a company. This has happened to me. And I think till my last breath, even if it is any plans that I have to haunt around, I would be doing PR for the rest of my life. Wow. So PR is something, I clearly say PR is actually what you feel about the subject to put across. Knowing across even hospitality very clearly, the upbringing again, it all comes from home. What we are being brought up with and the love and charm. I started the company thinking I will not work for hospitality. I've done it so much. My last Yeah. leaving line to the Rawar Kalra was, I'm done selling dal chawal RNG, and avocado carpaccio. I used to breathe in the dishes, but then over 2 years, I realized that I am just not done enough working for hospitality. There is so much, So and much. how much I do is less and least to even learn about. तो So अभी that उसके was ऊपर something. मुझे उसके Yeah, ऊपर भी पूछना है, अभी उसके ऊपर भी पूछना है, मेरे पास क्वेश्चन रेडी है जो आप बोल रहे हो कि देयर इज yes, सो मच टू इट. absolutely, absolutely. But then I think I've been fortunate that PR chose me than I choosing PR for my life to look at, to keep myself occupied and create an identity. That's why Hatch Project, everyone says that why a project? I said, like, it's about hatching, and when या you hatch, are you all set to create a new identity? So या it is more on those lines, and that's how PR happened to me. अच्छा, अभी क्या है कि आप तीनों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी, ग्लैमर, अच्छे से तैयार होके, हाई हील्स पहन के, पार्टीज़ में जाना, ये करना, वो करना, बट आई एम श्योर बीइंग अ वुमन एंड बीइंग इन पीआर कुछ ना कुछ इनिशियली चैलेंजेस ज़रूर आए होंगे, कुछ डिफिकल्टीज़ आई होंगी, जैसा कि मैंने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, वो मोमेंट्स भी आए होंगे। तो अश्मिता, आपके 1 या 2 सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर क्या थे? So Rajeshri, beginning of the career, like Sonali said that I like her. I don't come from a background where I studied mass हाँ, communication. मैंने पढ़ाई की हो, मुझे जर्नलिज्म का हाँ, हाँ, ये हाँ। भी नहीं आता. But when I say that, uh, I have learned things from scratch. हुँ, चाहे कितनी ही दफा किसी ने ये बोल ना दिया हो कि you know just good looks and good talks won't take you anywhere. I have heard this a यस, lot of times for myself. यस। Good looks and good talk won't take you anywhere. हाँ, It's not just good looks and good talk. वो भगवान की देन है, मेरे पेरेंट्स की देन है, but it's the hard work and perseverance that has brought me here and each one of us here. Uh, वो चाहे रात के 3 बजे सोना या, हो और सुबह के 5 बजे उठ के काम करना हो, where you're not being paid for what you're doing, या, but you're doing it because you want to do it, क्योंकि आप जिनके साथ कर रहे हो आपको पता है आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 5 साल बाद यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. यस, यस, यस। दीज आर लर्निंग्स. और जो मैंने एक लाइन नहीं ना, ये गुड लुक्स एंड गुड टॉक्स, ये मैंने बहुत सुना है अपने लिए कि which college did you study from, and okay, do you know, like a lot of times कुछ ऐसे acronyms बोले जाते थे कि जिनका मुझे कोई आइडिया ही नहीं होता था, तो लाइक हाँ, ओके, बट जब उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बात आती थी तो वो मुझे पूरा पता होता था, क्योंकि वो हाँ, मैं हाँ, करती थी डे इन डे आउट. या, And just because I did not know a particular term does not mean that I do not understand the whole story behind it. And bas, hard work, perseverance, and a lot of faith in myself and my God that if you वाह! have brought me here, it's for a purpose and I will fulfill that purpose. जिसको बोलना है गुड लुक्स है, बात अच्छे से करती है, वो बात अच्छे से इसलिए करती है क्योंकि पेरेंट्स ने वही सिखाया है, बात दिखाया तमीज से. है। एंड इफ यू फील दैट बहुत पोलाइट है तो आप शिमला आइए, आपको सब ऐसे ही मिलेंगे. देयर इज नथिंग डिफरेंट इन मी कि ऐसा नहीं है, बट the hard work या, has done the thing. आज भी होता है, आज भी रात के या, 2-3 बजे तक काम होता है, सुबह 5 बजे उठना होता है.
फ्लाइट पकड़नी होती है, जाना होता है, काम खत्म करना होता है, पूरा दिन यू हैव टू बी ऑन योर या फीट. Doesn't matter कि हम लोगों की teams हैं which are very supportive and everything, but you have to be on ground and do your work because that's how you are and that's what you've built for yourself. So that tomorrow nobody comes and says to some other girl कि या okay, you just got it easy for yourself. Nothing came easy in life. कुछ भी नहीं. नेहा, आपके साथ बिगिनिंग ऑफ द करियर में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि तुमसे ना हो पाएगा? मैंने तो आपसे पर्सनल लेवल पे शेयर भी किया था, और मैं ये ज़्यादातर कहना पसंद नहीं करती, बट आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ मैं हाँ, आई थिंक ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज आई रियली वांटेड पीपल टू हियर अबाउट इट, बिकॉज दिस हम्म, हैपेंस. हम्म, I was working in one of the topmost agency, PR agency in India at least, and I was hired for a very good position. I was doing my job fairly good. Uh, Obviously, the lady who was heading our Delhi office, हम्म, um, she used to harass me. Now, what is harassment? Harassment could be not only physical. हाँ, Harassment could be emotional. Harassment could be mentally, right? So she used to harass me, like sending me to the events जो मेरे हम्म, clients नहीं थे, जो किसी और सिटी के क्लाइंट्स थे, किसी और सिटी ब्रांच के क्लाइंट्स थे, उनको मेरे पास भेज देना और हम्म, बोलना कि रात को 10 बजे का इवेंट है, आपको जाना पड़ेगा. एंड आई ओके, यूज्ड टू से मैं नहीं जाऊंगी. देन आई हम्म, यूज्ड टू से अगर मुझे जाना है, बहुत ही सिंपल सी बात है. शी यूज्ड टू मतलब आई यूज्ड टू से कि यू प्रोवाइड मी कैब और द हम्म, रीइंबर्समेंट एंड आई गो, which is a basic thing in any PR agency. If you ask any of the entrepreneurs sitting here, she used to say no, you will only go via metro. हम्म, I said, okay, then at least an auto. She said, no, only a metro. I clearly said no. हाँ, I think it happened for, weeks and weeks and weeks, and I was tired because I am a person in my life. मेरी family ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है लाइफ में, हाँ, जो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ. हम्म, आपने किसी से डर के लाइफ में काम नहीं करना. करना है तो आप अपने टर्म्स पे करेंगे, नहीं तो आप या नहीं करेंगे. सिंपल, राइट? सो वो चीज़ मैंने घर में डिस्कस किया. आई क्राइड अ लॉट बिकॉज वो बहुत इनिशियल टाइम की मैं आपसे बात कर रही हूँ. हाँ, आई क्राइड अ लॉट. आई वाज लाइक नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऑल दैट. हम्म, I think my parents, rather my Taya ji, I would say, they were so supportive. They said you immediately just leave the job. You don't have हाँ, to do it. I went and obviously मैंने resignation डाला. The CEO of the company वो हम्म, मुंबई से वापस आए, दिल्ली आए, सिर्फ मेरे से बात करने के लिए. And he said कि you don't go, and he said that you don't go. Then आपका नेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ है नेहा. नेहा के नेट में थोड़ा इशू है. विल हाँ, जाता शी था. इज बैक. या हम्म, इनको मैंने अपने सामने जाते हुए देखा था. हम्म, आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली, ना मुझे रेस चाहिए, ना मुझे ये जॉब चाहिए. मुझे सिर्फ हम्म, चाहिए कि आप अगर ये नेगेटिव एनवायरनमेंट क्लियर कर देंगे ना, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड. आई लेफ्ट एंड ही कॉल्ड मी अगेन, अ मंथ ऑल्सो, मे बी 6 months के बाद ऑल्सो, और अभी भी मेरी बात उनसे होती रहती है. बट हाँ, जब मेरा फुल एंड फाइनल था, लिटरली आई थिंक सोनाली, अश्मिता, दिस इज ये आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हुआ होगा. मेरा हाँ, फुल एंड फाइनल था. आई वेंट द ऑफिस, साइन करना था, साइन किया. एंड दैट लेडी फ्रॉम द आई जस्ट सेड कि ओके, थैंक यू XYZ, इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद यू. एंड शी सेड, क्या करोगी, 9 से 5 की नौकरी वाली चीज तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, अपनी हाँ, कंपनी खोल लोगी, चलेगी तो हाँ, है नहीं. I said, thank you so much, XYZ. I think these words will forever motivate me, and thank you. I left from that place. I think I took a 15-month or a 20-day break, and I just had it in my mind that if I have in it me, I have worked with agencies, I have gained some experience, I have worked with different set of clients, sectors. Can I start my own? Like, या can I do something of my own? Can I manage some people? And trust me, that was the day I decided. I told my father. थोड़े से वो ये थे कि नहीं नहीं, अपनी एजेंसी हम्म, बच्ची शुरू करेगी तो शादी कैसे होगी, लड़के बोलेंगे कि ये तो अपनी कंपनी चलाती है. XYZ. ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट ओपनिंग अप दिस ऑन दिस इंटरव्यू. मैंने ये बात कहीं नहीं बोली है. सो दिस हैपेंड, बट आई गेव हिम अ ट्रस्ट कि आप मुझे टाइम दे दो, गिव मी हम्म, 6 months.
अगर मैं नहीं कर पाई, आई विल गो बैक टू दी जॉब, मेरे को जॉब कहीं वाह भी मिल जाएगी। वाह। 6 महीने दिए, 6 के कब साल हुआ, साल के कब 2 हुए, 2 के कब 8 हो गए, अभी तक नहीं पता। एंड माय फादर वाज फुल 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 ऑफ प्राइड जब उन्होंने वेरी गुड। पहला मेरे क्लाइंट के यहाँ गए, हमारा फैमिली एक डिनर हाँ था, हाँ। एंड वो क्लाइंट ने बोला आपकी बच्ची बहुत होशियार है सर, इसने हमारे रेस्टोरेंट का बहुत नाम कमा दिया। वो एक टाइम वेरी था गुड। व्हेन माय फादर हैड टीयर्स एंड ही अंडरस्टूड कि मैं क्या करती हूँ, और देन ही फेल्ट कि नहीं, शी इज इन द राइट प्लेस। तो आई थिंक वो एक एक जो मेरी लाइफ का फैक्टर था, आई थिंक दैट लेडी वाज द वन जिनकी वजह से मुझे बहुत बूस्ट मिला। आई थिंक आई फील आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे थोड़ा नेगेटिव बोला और काफी हद तक उन्होंने मुझे पुश कर दिया। वाह वाह। सोनाली, आपका क्या चैलेंज रहा शुरू से? आपने तो किसी के लिए काम नहीं किया, आपने तो अपनी एजेंसी शुरू करी अश्मिता की तरह से। सर एक्चुअली दैट्स व्हाट द थिंग इज कि मैंने कभी किसी एजेंसी में काम नहीं करा है और कभी एजेंसी के साथ काम नहीं करा है. So I've never felt any such obstacle. But having said that, because at home I'm from a service class background. My father हाँ worked at ITDC, which हाँ। had rotational shifts. Okay, so there were times that on Diwali our father used to be not at home at night. There was a night duty. So we had a clear understanding कि भाई काम होता है, अगर मेहनत से करना है, ग्रो करना है तो दिन रात करते हैं. It was हम्म very clear. So हम्म even if we had to be awake till whole night and then get up, make up and be there, so we were हम्म there. I actually do understood one thing very clearly, that हम्म। before you enter, your aura enters, your communication हाँ enters. So for me, yes, because again, coming back to the same thing, PR is about presenting yourself too. That was like a that was like a faff for me, a frill for me. हाँ। But या। then that made a lot of difference because people think before they open their mouth. They हम्म। actually think, because you create a thin line even on यस। with your clients interaction, because everyone needs to know that you have employed us. If you हम्म can't respect what we are doing for you, then I हम्म think it's better you should not work with us. Respect our time and yours. But I think the only challenge which I face every time is uh, people don't respect the work which you do. I have built brands in last 5 years. I've stopped working with them हम्म। because whatever relationship it be, pay your bills. Like if you can't या afford it, do it. Like या। just that's great. We have हम्म। built your brand. We will never toss it off. But या। I think that's the biggest challenge of being an entrepreneur. It is rest. I think you know what you do, and a kind of a challenge which other of two of them they have faced. I have not faced that, but there has been rest of the world, which we swing by. I truly feel that hospitality PR or PR as a professional is हम्म। nothing but a roller coaster ride which lives by Google Alerts. That's it. वाह। अच्छा, अभी देखो, आप लोगों से बात करते करते मुझे लगता है कि अभी हमने पर्सनल अर्लियर करियर की बात करी, आधा घंटा निकल गया पता भी नहीं लगा। और मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है, व्यूअर्स के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी थोड़ा सा स्पीड गियर बढ़ाऊंगा सो दैट हम जल्दी जल्दी बात करें, सो दैट हम अपने क्वेश्चंस पूरे कर सकें, बिकॉज आई हैव अ लाइन अप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द व्यूअर्स एंड माई सेल्फ जो मेरे को आपसे पूछने हैं। तीन चार लोग लेड बाय स्नेहा सेकिया एंड हिना एंड आशीष चांदना एंड अदर पीपल, दे वांट टू नो कि ये जो अजीत राजपूत भी पूछना चाह रहे हैं, और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि ये हॉस्पिटैलिटी पीआर होता क्या है? चार फूड सो कॉल्ड फूड इन्फ्लुएंसर इकट्ठे करके पीआर हो गया, या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में कुछ कर दिया वो पीआर हो गया? हॉस्पिटैलिटी पीआर होता क्या है? मैं अभी रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सोनाली फर्स्ट। सोनाली, आप बताएं कि पीआर एक्चुअली है क्या? So PR is nothing but basically building something from scratch, whatever be the perception, and हम्म making heard by the right people at the right time. It's just that. हम्म And people say it's public relation. I am actually of a different mindset because I have not done the textual book study. For me, it's people's relation. It's हम्म simply that. If you can communicate with someone what actually has gone as a thought of curating anything,
let be hospitality or let be any other platform, any Yeah. other industry. It's the same thing. You need to recite your story right to the right set of people at the right time. You Hmm. can't talk about monsoon menu during winters. So it is all about the timing that you look at. And definitely, for me, PR has different baskets to look at. One is editorial, one is digital to talk about, and then one is onto engagements. So Okay. that's how, I define it across PR for myself. नेहा, आपके हिसाब से हॉस्पिटैलिटी पीआर मतलब कहाँ शुरू होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, कहाँ तक ये स्टोरी जाती है? देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है। एक बड़ा अम्ब्रेला है विच इज मार्केटिंग, या और पीआर उसका एक पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट उसका एक पार्ट है, एंड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट दे ये एक सब पार्ट्स होते हैं। हाँ, अगर हाँ, मैं पीआर की प्राइमरीली बात करूँ ना, तो मैं बुकिश लैंग्वेज में कभी बात नहीं करती, क्योंकि जो मैंने भी पढ़ा है ना वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, पीआर बहुत सिंपल सी चीज है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, वो राइट टाइम पे राइट जगह छपना चाहिए, दिखना चाहिए, वाह, और लोग बोलने चाहिए। बस ये जो समझ जाएगा वो ये पीआर कहला, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीआर इज, सिंपल। हाँ, अगर मैं बोलूँ, जो आपने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि 5-6 फूड इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दैट, हम्म, इन्फ्लुएंसर वर्ड तो अभी आया है, हम्म, पहले उसको क्रिटिक और ब्लॉगर्स कहा जाता था, राइट? या, पहले की अगर मैं बात करूं, जब मैंने भी शुरू किया था ना, आई वुड रियली से फूड क्रिटिक्स एंड फूड ब्लॉगर्स वर एक्चुअली देयर। या, आज की डेट में वो सब मर्ज हो गया है, मतलब वो मेरी लाइन ही खत्म हो गई है। वो एक एंगल आएगा, उस पे अगली क्वेश्चन पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर मी, अगर आप पीआर की बात करेंगे। ओके, अश्मिता, आपके हिसाब से हॉस्पिटैलिटी पीआर क्या है, कहाँ शुरू होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सोनाली ने बात करी राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड राइट कम्युनिकेशन, नेहा ने बात करी ब्रॉडर अम्ब्रेला मार्केटिंग के एक पार्ट पीआर है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? So, Rajesh ji, that thing, वो है ना, Rome was not built in a day, and so is यस, none of the brands that we have worked with or we are working with. उस पूरे ब्रांड की पोजीशनिंग फ्रॉम स्क्रैच लाइक अ बेबी, वो वो पूरा उसको एक तरीके से उस प्लान को कंसीव करना, उसको लाइफ में लाना, उसको ब्रीथ कराना, उसको एक सराउंडिंग देना, एक हैप्पी सराउंडिंग देना। द वर्ड हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक हाँ, हैप्पी सराउंडिंग सब चीजों के लिए देना, एंड पुट इट ऑल टुगेदर एंड गिव द बेस्ट वन लाइनर अबाउट इट, कि जब लोग उस ब्रांड के बारे में सुने तो लाइक, ओ आई हैव सीन इट, इट्स वेरी नाइस। दे डोंट नो कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी में यस, हमारा कितना योगदान है, बट दे सी व्हाट वी वांट देम टू सी। एंड उस स्टोरी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पीआर का कभी भी जो गैम्बिट है वो छोटा हो ही नहीं सकता, वो दायरा बस बढ़ता ही जाता है, एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग एडेड। सो मेरे लिए यही है दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। नो पीआर एक्टिविटी starts or ends with one person. It's a community. We come together, we build a brand together, we nurture it, we हाँ, तो यू नर्चर इट ओवर द इयर्स, राइट, ओवर द पीरियड, राइट। अच्छा, मैं दूसरे क्वेश्चन में जंप करने से पहले ना, आई एम टेम्पटेड टू गिव माय आंसर आल्सो ऑन दिस, बिकॉज मैंने भी शुरू में पीआर पढ़ा, आई हैड Yeah. माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पीआर, एंड मैं शायद आई थिंक अस्मिता से शेयर कर रहा था। वेरी फर्स्ट डे जब मेरा प्रोफेसर क्लास में आया, तो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि यू आर ऑल कम हियर टू स्टडी पब्लिक रिलेशंस, पीआर। तो उसने ऊपर इंग्लिश में लिखा पब्लिक रिलेशंस, और बोलता है देखिए इसके दो वर्ड्स हैं, पब्लिक आपके हिसाब से पब्लिक प्लूरल है, बट मेरे हिसाब से पब्लिक सिंगुलर है, तो इसमें बहुत सारी पब्लिक्स होंगी जिनको आपको एड्रेस करना है, जिनके साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना है। तो इस साइड जिंदगी में एक ही चीज याद रखना, पब्लिक रिलेशन जो उसने इंग्लिश में लिखा, तो उसके नीचे एरो डाल के हिंदी में लिखा पीआर इज इक्वल टू प्यार। तो कहते हैं अगर प्यार में जैसे एकदम ईमानदारी होती है और एक इमोशन के साथ आप दूसरे के लिए करते हैं, पीआर इज नथिंग बट प्यार। अब जब आप प्यार करना शुरू कर दोगे अपने क्लाइंट के साथ, अपनी पब्लिक के साथ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आई वाज टेम्प्टेड टू गिव दिस आंसर बिकॉज ये मैंने कई साल पहले सीखा था। अच्छा, अभी चलते हैं। देखिए आप लोग जो हो ना, जैसा कि मैंने कहा बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, इंट्रो में भी बोला,
मेरे को लगता है आप लोग सैंडविच हो, आपके एक तरफ क्लाइंट है, उसकी एक अपनी एक्सपेक्टेशंस है, फिर आपकी तरफ ये आप ब्लॉगर्स कह लीजिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, क्या है, उनकी एक अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये बताइए कि आप इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं, इन दोनों को एक्सपेक्टेशंस को आप मीट कैसे कराते हैं, बैलेंस कैसे कराते हैं? विल स्टार्ट विद नेहा। देखिए, बैलेंस कराने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप ही अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं होगे ना, तो आप उसको बैलेंस कर नहीं सकते। सो हमारा तो रूल है, एंड आई एम फेमस फॉर दैट इन द मार्केट ऑल्सो। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ ना, मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ। मैं वर्ड्स को ट्विस्ट करना पसंद नहीं करती इन रियल लाइफ ऑल्सो। I stay straight to my clients also, to the media person also, and to the social media influencer also if we are inviting. Obviously, we need their help, we need their platform, you know, because मेरे client को अगर ये दिख रहा है कि they are also giving the services, as in they are treating somebody over the food or drinks or whatever even, but you have to understand that they are also coming, वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। यू हैव टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट, सिंपल, एंड इट्स वेरी क्लियर। योर हॉस्पिटैलिटी हैज टू बी वेरी गुड। द वे you do not think कि the media person is coming or the editor is coming or let's say the social media influencer is coming. No, just think a customer is coming. जिस दिन आप वो समझ जाओगे कि आप एक कस्टमर को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, वैसे ही आप सबको ट्रीट करेंगे, बैलेंस हो जाती है अपने आप चीज़ें। And especially at my events, I make sure that I actually take care of everybody like I take care of people at my home. I always do that, and this is in me. वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब मैं तो लिटरली ये भी कर देती हूँ कि खाना उठा के मैं ही सर्व करना भी शुरू कर देती हूँ इवेंट्स पे। ऐसा भी होता है। I am famous for that and people can vouch for it because वो मेरे अंदर है। because I cannot see, अगर थोड़ा सा भी मुझे दिख रहा है कि इसमें डिले है, बिकॉज इट्स एन इवेंट, हो जाता है, कहीं डिले है, तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज, आई वुड से, जब आप ये एक अपने लिए एक एज अ अथॉरिटी समझ लेना कि ये मेरा बेबी है, इस बेबी को नर्चर मुझे करना है, तो उसके आगे की चीजें भी मुझे ही बैलेंस आउट करनी है, तो कर लो, सिंपल। सोनाली, आप बताएं कि ये जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, और आप कैसे बैलेंस करते हैं सैंडविच रोल? हाउ टू बैलेंस दिस? So when we onboard any client now, we have three things very clear: objective, short-term goal, and long-term goal. Majorly यही होता है कि they want to build their equity, and basis building, during the journey of building equity, what all you do. Now, influencers, media people, fashion stylists, whatever with the segment of industry that you work with, क्योंकि अब horizon इतना बढ़ गया है post pandemic that everyone is actually watching everyone. So for us as a company, what has been imbibed by the master to me, like I again go back again and again quoting ZK, is that everyone, who's coming to the outlet has to be treated the way you treat media. Okay. Perfection to the core and detailing to the essence of where the procurement has been done. That is something which happens at the outlet level. But knowing of this sandwich, before even inviting anyone, PR is never transactional. If you ask about my clients, my 98% of clients are those clients who have known me from last a decade, if not more. Or if would have been connected through me to a known person. I do not work with people who are just random, who have come in front that we want to work with you because it is my name that goes along. And if I've really worked hard balancing, it is very important that I put you also on the same block. We as a company don't reach out to influencers only when we have to do a transactional reach out to them. It's about building relationship of the client with the influencers, bloggers, media on an ongoing basis. It is not a one-day's job. So the sandwich is no there. I think it is basically the balance which needs to be done on an understanding objective and what is it that we are giving through. It is here about understanding from the client and there about respectfully explaining the concept of what is the outcome that you are actually looking at. And to be very honest, yes, there are few people whom I really vouch for in the industry with across sectors because
They are blind bet on ROIs, which I have actually used, keeping the pitch in mind. Everyone is not for everything. Like, Yeah, similarly, it is not everyone's flavor to look at. So yeah, it is more onto balance that how you look at. Been very fortunate to work with even bigger brands. We have never been in a situation where we actually have been sandwiched. So we have been great. quite kind enough. Yeah. That's Sonali's skill. No, I think that is what I have learned, and I'm just teaching around to the team. अश्मिता, आप कैसे बैलेंस करते हो? आपके साथ तो आप ब्रांड्स के साथ भी काम करते हो और सीनियर गवर्नमेंट लोगों के साथ भी काम करते हो, तो दोनों के एक्सपेक्टेशंस आप कैसे बैलेंस करते हो? Uh, Rajesh ji, patience and perseverance. These two P's have always worked with me because of a bigger P, which is my papa. So my हाँ. papa taught me patience and perseverance, and I take Oh, them very handy and seriously. Uh, मेरे लिए एक चीज है that be it hospitality or any other sector, and especially if it's to do with high profile government people, it's never like it's my way or the highway. It's never that. If you carry that approach, hmm, then you might reach the highway, but then you would have to take a U-turn and come back home and sit without work. So you hmm, have to navigate your way through things. um, I do personally feel that sometimes, yes, we do get sandwiched between situations, but it is your thought, आपका intellect, आपकी सोच, आपका नजरिया जो आपको उन situation से बाहर निकालता है, and you become better at what you're doing. And for this to happen, the client needs to be by your side. It cannot be yeah, कि छोड़ दिया और इसी पे है, अच्छा हो बुरा हो इसी का है, नहीं. Like I said, it's a two-way street. It's not a one-way street. It's not my way or yeah, the highway. वो नहीं चलता, वो कहीं नहीं yeah. चलता, and that's very important. Uh, मेरी clientele for God's been kind ऐसी ही रही है. The kind of people I work with are either very um, शॉर्ट टेम्पर्ड और हॉट हेडेड और एनी ऑफ दैट. वो चीजें बहुत होती है मेरे साथ, बट लकीली टच वुड आई हैव बीन एबल टू मेंटेन दोस रिलेशनशिप्स फॉर व्हाट 4.5-5 years Yeah. नाउ. थ्रू द पैंडेमिक वो देखा है, कुछ नहीं बदला है, इनफैक्ट better हुई हैं चीजें, because you stick by Yeah. what you say. You have to do that, and you cannot carry I approach. मुझे एक चीज कुछ टाइम पहले समझाई थी कि when you receive appreciation for what it's done, for what has happened, it's always like, we are thankful for what you Yeah. see in our company, in our team, in the activations that we've produced for you. But whenever there is a scathing comment or a negative comment or something that's not going to go Hmm. nicely down your throat, take it as an I. Don't put it on your team. And that is Okay. something that happens where the whole sandwich process starts. जब आप वो मैं ही मैं से Hmm. उभर के हम में आ जाते हैं, तो चीजें बहुत सटीक तरीके से नॉर्मल हो जाती हैं, एंड फिर Great. काम करने में आपको अच्छा भी लगता है, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट. एंड देन इट डज नॉट मैटर कि फिर किसी से छोटी मोटी तू मैं हो गई या कुछ बड़ा मन मुटाव हो गया, वो सब सॉल्व हो जाता है. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे इंतजार कर रहे हैं कि वो मैं क्वेश्चन कब पूछूंगा. मुझे व्हाट्सएप पे बहुत प्रॉम्प्ट आ रहे हैं. मैं सोनाली से शुरू करता हूँ. सोनाली, आजकल क्या है कि देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो थोड़ी अपना एक प्रोफाइल बना लिया और मैं देखता हूँ करीब 20-25 फॉलोअर्स हैं, नीचे लिख देते हैं फॉर कोलैबोरेशन डीएम मी और ये और वो. तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास आपके उसमें संपर्क में आते होंगे. तो ऐसा कौन से सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को आप हैंडल कैसे करते हो, और ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है कि किसी डिफिकल्ट क्लाइंट को या डिफिकल्ट इन्फ्लुएंसर को आपने हैंडल किया, कोई फनी इंसिडेंट वो बताइए. Sir, when I actually was working with Ravar, we had this brand which started Farzi Cafe. So हाँ, we had to literally educate people on what is the meaning of tapas. It's a हाँ, tapas bar and no kids policy in Cyber Hub. Okay. हाँ,
So it was food bloggers, and we used to get thrashed a lot on social media. But one thing I learned again, from the mentor whom I chose, and it was very simple कि अगर आप कुछ सही कर रहे हो ना, आपको you have to stick to it and explain it to them. You don't हाँ have to be apologetic onto what you're not doing because that is what the standard you have created. हाँ Having said that, recently an incident happened. Recently at one of the हाँ restaurants, there was an event and engagement happening, हाँ and there was an influencer. There was I think 2 minutes of gap on a guest list, हाँ and the hostess went inside to check the count, and the guest came in, हम्म, and the bouncer asked to wait that the हाँ hostess is coming. The 5 minutes wait could not happen. He came banging inside, asking for my colleague because my colleague had invited. I was just sitting right next to my colleague having my martini. That's हाँ it. And he comes, he thrashes her in front of people, uses foul language, and says, "You don't know. I'm going to tell this thing to Sonali. She's a हम्म, very dear friend of mine, and she will throw you out. You have no हाँ, idea what you have done." And I'm sipping my martini sitting right there, right there. And my colleague also did not look up to me. That and she just was like, "I apologize. What happened? But what happened? Your name was there. Everything is there." All said and done, the influencers goes to the bar, take two shots, and steps out and thrashes us on social media. Maybe after this, it will happen again. हम्म, Having said that, the learning was very clear. It does not make a difference of how you see. It is about your character. It is about yeah, what you communicate. Brands are being thrashed inside out for a no entry, for a shorts where someone is wearing shorts, not being allowed. I saw, people writing day in, day out. That's हम्म, not the place. What were influencers made of? Influencers हाँ, were made by the restaurateurs, by the yes, industry, by the retail, let be apparel, fashion, or FMCG to talk about. They were made by the brands. Now, as the community is increasing, you buy followers, you buy a blue tick also now, and you are there. Like, I really wonder that people need verification of their existence. Like, did yeah, you ever ask your school teacher to give you a blue tick? It was yeah, always about, your scorecard which mattered. What are you doing? It was yeah, nothing else. It was yeah, always that blue blazer, that scholar blazer, which everyone used to work for. So, yes, very clearly, I think for me, understanding is pretty clear of हम्म, brands who resonate with certain set of people. Every influencer, everyone who calls themselves influencer is not हम्म, for that brand. They may be very big in wherever they are. They may be my friend whom I don't know. हम्म, But I think my brand for which I'm operating and working for, they don't resonate. A lot of times my friends they get हम्म, upset. "तूने हमें नहीं बुलाया." Arey boss, it is not me. It is actually the brand, and that yes, brand might not resonate with you. And yeah, apparently, because of the over the year respect garnered and the relationship built, influencers, bloggers, media people, anyone who ever had this disappointment of not being invited has always understood that there is a reason because the old people whom we say who are actually yeah, the veterans, they understand what is substance rather than yeah, inviting someone for a food event and posting selfies of you were there. That is not what the client is looking at to get yes. influenced by the audience. So that's how it has been with me at least to look at. नेहा आपके साथ क्या फनी इंसिडेंट हुआ ऐसे सो कॉल्ड फूड मैं इन्फ्लुएंसर्स या मैं ब्लॉगर्स को तो सताते हैं? सोनाली का सुन के इतना हंस रही थी। एक लाइन जो सोनाली ने बोली है that there are my friends who might I don't even know. I was laughing. I was Yeah, yeah, it I could happened. so Yeah, it is not relate even to been a it. month, I and could I so was sipping relate to it. martini, just chilling. And this has happened with us, like this happens with us all the time. I'm telling you हाँ, Rajesh ji, this is a very common practice these days. लोगों को पता है कि ये ब्रांड है, इनका पीआर कौन है। रादर आप पीआर को छोड़िए, लोग ओनर का नाम लेके आते कि हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें डिस्काउंट दे दो या हमारी हमारी टेबल फ्री कर दो। एंड व्हेन मैनेजर मैसेजेस द ओनर
मेरे पास हाँ, लिटरली रात को 10 बजे 11 बजे एक बार 12:30 बजे एक मैसेज आया, मैम एक टेबल है एंड दे आर सेइंग कि नेहा मैम उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने कहा अच्छा नाम बताओ। आई ऑब्वियसली आई डोंट नो द नेम आल्सो। आई सेड आप एक हाँ, काम करो मुझे फोटो भेजो। हाँ, उन्होंने कैसे भी करके फोटो भेजा विच इज लिटरली थोड़ा सा अनएथिकल बट ठीक है, वी नीड इट। हाँ, आई सेड देखो बॉस आई डोंट नो दीज पीपल, भगवान के वास्ते इनसे पूरे पैसे लो और इनको जाने दो बिकॉज आई डोंट नो। सो दिस हैपेंस एंड दिस इज अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस जो लोग कर देते हैं। हाँ, आई वुड से जो सोनाली ने बहुत अच्छी बात बोली, जो सीनियर पीपल है ना, जो मैं पहले भी बोल रही थी, जो ब्लॉगर्स थे जो रियलिटी में लिखते थे खाने के बारे में और आज भी वो लिखते हैं। इफ यू विल हाँ, सी be it an Instagram post, be it a Facebook post of them, it will be a detailed description of the food, of the place, of the drink, what they had, everything. Putting a selfie and just saying ki oh my god lovely place and tagging me also on that post doesn't satisfy my client at all, yes, yes, right? yes. People, you can put it your picture definitely on your platform, but not for my client at least. You have to, you have to balance it out कि आप जा रहे हो एटलीस्ट खाने का तो कुछ डालो, आपने क्या खाना खाया, या आप किसी इवेंट पे आए तो वो इवेंट क्या था, एटलीस्ट कुछ तो आप डालेंगे ना। सो दिस Yeah, हैपेंस, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग एंड ये होता है। मेरे साथ हाँ, एक इंसिडेंट सिर्फ इतना हुआ था, 4 ब्लॉगर्स थे। हाँ, अब मेरे को नहीं पता अब मैं उनको ब्लॉगर भी बोलूँ तो क्या ना बोलूँ, वो मेरे क्लाइंट के यहाँ चले गए और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास पहले कॉल नहीं आया। मेरे पास कॉल सिर्फ तब आया जब वो टेबल पे आधा खाना खा चुके थे। तो उन्होंने बोला कि हम तो नेहा बहल को जानते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा मैम हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने रिव्यू के लिए आना था, आप हमें मैसेज दिखा दीजिए। ऑब्वियसली उनके पास कोई मैसेज नहीं था एंड मेरे पास कॉल आया। आई सेड मेरी बात करा दो। लकीली उन्होंने ये नहीं कहा कि नेहा मैम कॉल पे है। हाँ, तो हाँ, दे I said hi, may I know who's on the call? They said ABC. I हाँ, said who invited you? हाँ, So they said Neha Bahal. I अच्छा, said okay. I said नेहा बहल का नंबर होगा आपके पास, कैन यू कॉल? नहीं नहीं हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे बात कर रहे हो। मैंने कहा आपकी उनसे कभी बात हुई है? हाँ हाँ हाँ, हमारी तो रेगुलर बात होती है। मैंने कहा मैं नेहा ही बात कर रही हूँ। They're like, बस, oh, अच्छा, अच्छा. वो actually उन्होंने then they took some other name. I said, I'm so sorry. I can have a bill which has a discount for you, but I cannot leave you कि आप फ्री में निकल जाए यहाँ से। मैं नहीं कर हाँ, सकती। मैं कहा that's not the thing. Obviously they bashed me कि हम नेगेटिव रिव्यू डाल देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने कहा आप डालो, मेरे पास तो कैमरे में आपकी फोटो है। मैंने कहा मैं पब्लिकली डाल देती हूँ। मैंने कहा हाँ, मुझे तो 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा शायद आपकी बात कम सुनेंगे, मेरी तो ज्यादा सुन लेंगे प्लेटफॉर्म पे। Sometimes you have to be little strict with yeah. such people, but most of the time थोड़ा पोलाइट वे में हंसते खेलते इन चीजों को हम निकाल देते हैं। अश्वेता आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा इन्फ्लुएंसर्स के साथ टचवुड इतना उठना बैठना नहीं होता है, हाँ, बट हाँ कभी कभी द quote unquote celebrity influencers, or they like to put it as that we come under the alpha plus category. एक दो उनके साथ मनमुटाव हुए हैं, जहाँ तक जहाँ पे आई कैन से दैट they've unabashedly went out and said things, put out हाँ, messages to my clients as well, saying अच्छा, that this is how she behaved and that is how it is. But Rajesh, they don't understand that हमारा घर नहीं है वो, कि आओ आप बैठो खाओ पियो और जाओ, वो वैसे नहीं चलता है। We follow a certain guideline. The client sends us a certain set of instructions. You got to follow yeah, it to T. If something is not working for the client, if the client is not like कि अच्छा आपने इसको क्यों बुलाया है, आपने हाँ, why this person, you have to be ready with your answers, that why did you invite this yeah, person, why don't you want this person, you have to be ready with that answer as well. But when somebody comes and the conversation happens about paying the bill, and then suddenly it is that oh she did this, वो पिन पॉइंटिंग शुरू हो जाती है, फिर क्लाइंट्स तक कॉल चली जाती है, फिर होता है कि हाउ कुड शी डू दिस। और दिल्ली में ना ये चीज बहुत है जो मैं देखती हूँ कि यू डोंट नो हु आई एम, ये मैंने yeah. यही देखी है, यही की है।
बहुत सोनाली और नेहा बिल्कुल जोर जोर से हंस रही हैं आपकी इस बात पे कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, तो या तो और ये मैं इतना सुन चुकी हूँ कि हम लाइक ओके ठीक है, आई एम श्योर अब होंगे कोई, बट मैं नहीं जानती अब कौन है। सो यू नो, यू टेक योर कॉन्वर्सेशन एंड आई लीड माइन। बट होता है, और मैं तो प्रे करती हूँ भगवान से कि जितना कम हो मेरा इनसे इंटरेक्शन हो, क्योंकि या तो मैं इनके साथ बात कर सकती हूँ और इनकी समझ सकती हूँ, बिकॉज again they come, they put their pictures, they put out everything, they'll put out brands which are not associated with why you've been called. या You do not need to put out an apparel brand and tag the apparel brand if you're here या to hospitality brand. Nobody Yeah. is here to see what shoes you wore, what dress you wore. They're here to see the context of what you've been called for and why such a big brand is inviting you. What is so या good about that they want to work with you. अगर आप वो नहीं डालोगे और थैंक यूज लिखोगे, बहुत बारी तो मैं स्टोरीज शेयर ही नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ है नहीं. माय क्लाइंट इज गोना बी लाइक, were you trying to make friends via my event? No, we या are here to do and follow the mandate what it is there to make sure that the best of the best come, see, witness, explore and have a good time at the outlet, enjoy the hospitality, because that's what's important. अगर वो fulfill नहीं हो रहा है तो फिर हम नहीं हो सकते वहां पे. वाह। अच्छा, अभी मैं आपसे ना इतनी बात हमने कर ली, करियर की बात कर ली, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ली, क्लाइंट्स की बात कर ली, बैलेंसिंग की बात कर ली, फनी इंसिडेंट्स की बात कर ली। अब मैं आप तीनों से बारी बारी से रैपिड फायर पूछूंगा और आपको ये एक नाम बताना और वाई बताना एक सेंटेंस में। सो विल स्टार्ट विद सोनाली। सोनाली, यू एडमायर द मोस्ट एंड वाई, फूड इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? वन नेम एंड वाई। One name only? Okay, two. Only one name? Okay, Okay. two. Okay. One I'm gonna say because whom I look up to every day. That is Tikuji, because his content is pleasing for your soul. Hmm. चाहे वो खाना है, चाहे वो लोग हैं, he captures relaxing moments of people. It is so nice, soothing. I take breaks. People might take power naps. I take breaks. I do go on Instagram and check his content. Uh-huh. Two, there are a lot of influencers, who are there, but I believe there has been one who I have worked last year very, very closely. In fact, I know her when she was 600 followers. Sneha, she does not even know that I will be taking her name, Sneha Arora. Uh, She does a lot of work, but I think that's one influencer because I've seen it from the backside. I knew her, sir, when she was 600 followers, uh, some a decade back, and the way she has outshined. hmm. And ये नहीं है कि वो brands के साथ associate करती है. Sir, she is a real influencer because जब वो content डालती है ना, बिजनेस आउटलेट में आता है, प्रोडक्ट्स आपके शेल्फ से मूव होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स क्लाइंट को वेबसाइट पे जाते हैं. मैं अगर लाइफस्टाइल इंडस्ट्री की बात कर लूं, आई हैव सीन अ वेरी गुड आरओआई विद हर. सो दीज आर द टू वंस टू लुक एट एज Nice. इन्फ्लुएंसर्स. या Chef. Chef. शेफ, मैंने जब खाना बहुत इंटरेस्टिंगली देखा तो मैंने सौरभ उदिनिया के साथ देखा, जो कि अभी रिवॉल्वर में है इन सिंगापुर, व्हिच इज आई थिंक वेरी क्लोज टू बीइंग अ मिशेलिन नाउ. So for me, it is him because the art of plating and the glamour of flavors which comes in the spotlight, I experienced with him. So मेरे लिए तो he is the star boy to look at. Restaurant you admire the most? I don't think there is any one restaurant which I would like to admire, but because it's nostalgic, my father loves going to Gulati's, though there are a lot of places above and beyond Gulati's, but he loves to go to Gulati's, so we all love the time there. So it's my favorite Wow. restaurant to talk about. That also Pandara Road, only Yeah. Pandara Road. Deepa. Yeah. And finally, the restaurateur of the you admire. Restaurateur. Restaurateur which I admire yesterday, today, and forever, that is Ravar Kaldra. I knew this. Yeah, he's the one, he's my mentor. I have learned a lot, specifically in hospitality from him. So, yeah, definitely him. So we come to Neha now. Neha, food influencer or the social media influencer you admire the most? आई थिंक फूड इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली मिस्टर टिक्कू, हाँ. बिकॉज उनका जो कंटेंट है ना वो बहुत ही जिसे कहते हैं, एक तो डायरेक्ट दिल से है
और हाँ मतलब वो रूटीन वाला है, मतलब वो बेसिक आपके साथ भी होगी चीज, तो वो बहुत आप रिलेट कर सकते हो उनके कंटेंट से। दैट्स व्हाई भले वो अपनी वाइफ के साथ डालते हैं, बच्चों के साथ डालते हैं, और वो हमें भी बीच या बीच हाईवे पे भी मिले तब भी उन्होंने कंटेंट बनाया है। तो मतलब टिक्कू जी इज ऑब्वियसली हैट्स ऑफ द विनर। I really like Socio Martini. I don't know people know या that platform or not. Socio Martini का content बहुत ही classy है, बहुत ही ज़्यादा classy है, because the way I think they shoot it, they present it, मतलब nominal सा एक, अगर they are representing a thali also or a festival also, it's presented in such a beautiful way that I love seeing their content for sure. एंड शिवेश भाटिया फॉर श्योर, शिवेश भाटिया का मुझे कंटेंट बहुत पसंद है और मैं कुछ कुछ रेप्लिका करने की कोशिश करती हूँ, व्हाटएवर ही मेक्स इट। एंड लास्टली आई थिंक सुप्रिया नागपाल, because her content is very relatable in the sense she puts every sort of content, you know. She puts her kids related content also, she relate lifestyle related. I love her fashion sense, and her exercise routine and everything. I love that. So I think that is relatable to me. शेफ Favorite chef, of course, hands down, Chef Atul Kochar. I am working with him, and now तो एक वो होता है ना, एक फैन तो मैं उनकी थी, बट मैं अब उनकी फैन, एसी सब कुछ बन चुकी हूँ, because the या way he he's a gem of a person. Simple, one line and finish. He's gem of a person, personal, professional, both front. उनसे बड़ा, रेस्टोरेंट इतना बड़ा शेफ लेकिन इतने हम्बल शेफ मैंने नहीं देखे, लिटरली मैंने नहीं देखे। एंड नो डाउट शेफ अनाहिता एज अ कंटेंट पर्सन, ओके मतलब लिटरली माय फीड इज फुल ऑफ हर कंटेंट, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट डालती हैं वो, जो भी बनाती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डालती हैं। आई लव हर। रेस्टोरेंट यू एडमायर Restaurant I admire for sure. There's a very small restaurant in Crosspoint Mall, Gurgaon, by the name of Absolute Thai. Me and my husband are great lover of Thai and Asian food. Absolute Thai is our favorite place. हाँ And Saga for sure. We love Saga. मेरे से ज्यादा मेरे पति को पसंद है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। So Saga is for sure. And Cafe Stevo for other reason also, it's very close to my heart because of the food, because of my basic I think starting with the Cafe Stevo when it was launched. So I think Cafe Stevo दिल में है। ओके एंड रेस्टोरेंट यू एडमायर द मोस्ट So not one, मैंने आपसे शेयर भी किया था। सो विशाल आनंद फॉर श्योर, हैंड्स डाउन, बिकॉज जो उन्होंने किया उसको कॉपी करने के लिए और भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो उन्होंने किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया। ही गेव द नेम अप फ्रंट on his restaurant at the beginning of the gate of all the agencies involved in the restaurant, right from the people to the agencies to the smaller people who were involved in the making of that restaurant. That was a huge appreciation for us. So I think Vishal Anand, and he is one humble Bihari guy. I am वाह married to a Bihari guy, but now I can say that all Biharis are very good and they are very humble, they are very hospitable. अगर हॉस्पिटैलिटी सीखनी हो ना कि क्या होती है, वो बिहारियों से सीखो, ये फैक्ट है। आज मैं डिजिटली लाइव ये बात बोल रही हूँ। बहुत बहुत एंड अश्मिता और सोनाली बहुत जोर जोर से हंस रही हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं तो एंड विक्रांत बत्रा फॉर श्योर। उनका एक रीजन है मैं विक्रांत बत्रा को क्यों पसंद करती हूँ। विक्रांत बत्रा इज वन गाय जो आपसे पहले मोमेंट पे कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे, वो आपसे ओके कभी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आप उनको अगर समझाना शुरू करेंगे ना तो वो हमेशा कहेंगे आप सही हो, यू टेक अ कमांड, और मैं जो आप बोलोगे ना मैं वैसे ही करूंगा। ही गिव्स यू दैट रिस्पेक्ट दैट आपको लगता है कि नहीं यार, ब्रांड इज लुकिंग अप टू अस फॉर सम गुड आइडियाज और व्हाटएवर। सो विक्रांत बत्रा इज आल्सो वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। अश्मिता नाउ टू यू, आप बताइए फूड इन्फ्लुएंसर आपका फेवरेट कौन सा है? सो वैसे ऑनेस्टली मेरा कोई फेवरेट फूड इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं फूड इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा शेफ्स के पेजेस देखती हूँ कि वो हाँ क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर चीज़ें डालते हैं। हाँ एंड जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं,
इतना ब्यूटीफुली उनके शॉट्स होते हैं, एक नॉर्मल स्टोरी भी डालेंगे तो उसमें एटलीस्ट वो एक आपको एक वैल्यू दिखेगी और वो नोशन पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इट meant and how it is तो supposed to चलिए be. फिर आप फिर बताइए शेफ whom you admire the most. So I like this chef called Chef Guntas. उनकी she's this wonderful lady. उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ. हाँ, I hope I meet her someday because I admire her way, her demure. वो जैसे बात करती है, काम करती है, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आता है उनका. Other than that, there are many South Indian influencers जिनको मैं follow करती हूँ because I enjoy the way वो खाना बनाते हाँ, हैं, and even Bengali influencers. yeah, So yeah, like there's this one the bomb kitchen नाम से है. She lives in yeah, UK and yeah. उसने कुकिंग सीखा in the pandemic और इतने अच्छे से सीखा कि now she has I've been following her for what, जब उनके I think 5,000 फॉलोअर्स थे, now she's at 250K. तो मुझे Wow. बड़ी खुशी मिलती है that I have been there through the journey and it's a fangirl moment जब मैं उसे मैसेज करती हूँ वो रिप्लाई करती है समय. Wow. So Okay. Restaurant you admire the most? Restaurant? restaurant I admire the most. So, of course, Delhi has given me the kind of love appreciation that I couldn't have expected ever in the hospitality industry. But it is not from Delhi. It has to be back from home in Shimla. जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा का स्केड्यूल लाइक आई सेड बहुत बिजी रहता था, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर कि वो मुझे बटर चिकन खिलाने लेके जाए. एंड देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड आशियाना. वो छोटा शिमला में था. एंड मेरी मम्मा को आधी चीजें पता ही नहीं है आज तक कि व्हाट ऑल मी एंड माय फादर हैव डन टुगेदर. सो ही यूज्ड टू डू दिस. मेरा स्कूल खत्म होता था, ही यूज्ड टू टेक मी देयर एंड it wasn't that he was a vegetarian, so वो नहीं खाते थे, मैं खाती थी और वो मेरी शक्ल देखते थे. So for me that restaurant will always have more value and that you know that heart and soul connection, क्योंकि मेरा बचपन बीता है, मैंने वो देखा है, मैंने उस जगह को बढ़ते हुए देखा. अब मैं नहीं जाती क्योंकि अब मैं शिमला ही बहुत कम जाती हूँ, जब जाती हूँ तो फैमिली के साथ ही होती हूँ, but I will always remember it because I've had the fondest memories there. Okay, and a restaurant here? The restaurant here. So there are a couple of them that I really like, and I get to work with them. I have worked with them, but hands down, like I said, Samrat has taught me everything in the hospitality world, and I cannot thank him enough for teaching me what it takes to be good at what you do. It will always be him to me. So now आप लोगों को तीनों को शायद नहीं पता लग रहा, मेरे को यार दिख रहा है हम लोग ने ओवरशॉट कर दिया 15 मिनट से. 1 घंटा 15 मिनट हो गए और हमारे पास अभी बात करने के लिए बहुत है. अभी तक इतना लंबा शो कभी नहीं चला मेरा, और मेरा शो बंद करने को दिल नहीं कर रहा. बट स्टिल लेट मी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस शो एंड मैं आपसे बोलूंगा, मैं चाहता था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करें, बट यस क्विकली 5-7 जगहों की अगर बात करें कि अब आप हॉस्पिटैलिटी पीआर भी करती हैं, पर आपके अपने सबके पर्सनल फेवरेट है, जैसे सोनाली ने बताया गुलाटी, और अश्मिता ने बोला कि उसका नॉस्टैल्जिक है कि वो वहाँ जाते हैं शिमला में बटर चिकन के लिए, और नेहा ने बताया साउथ पॉइंट मॉल में थाई. आपको किस शहर का खाना पसंद है और वहाँ पे क्या क्या खाना पसंद है? 4-5 जगह या 4-5 आइटम्स बताएं फटाफट. वी विल स्टार्ट विद सोनाली. Okay, if I talk about favorite food, if I have to choose, I will choose this Umesh dosa, which is basically in Bangalore. It is a small, ओके. I think 40 or 80-year-old shop, जो मुझे शेफ हाँ. निशांत चौबे ने और शीतल अच्छा. सी जो बैंगलोर की है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था. एयरपोर्ट से सीधा ही वहां ही जाना है, लगेज भी नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, फाटक के सामने. And one, we were late because things were NA. But then when I had it, I think now it's been good 9 years that before I go home, I first go there. वहाँ मत्था टेक करके अपना आराम से हमने अपना इडली सांबर पूरा डोसा मैसूर मसाला खा करके ही आगे जाना है. But being a Delhi girl, अगर एक दिन हो और सब कुछ चूज करना हो, it has to be चाय, तो वो तो घर की हो. That is something which is there. और अगर लंच करना है तो
जो सेंटर मार्केट में वो जो मटके वाले मटर कुलचा होते हैं वो, और शाम को लाखों अगर में देखना है तो हाँ बिल्कुल सेंटर हाँ मार्केट के। हाँ और अगर शाम को चाट खानी है तो यूपीएससी की चाट, वहां पर लाइनों में लगो, सिंस चाइल्डहुड बीन डूइंग दैट टू हाँ, लुक एट। एंड अगर डिनर है टू लुक एट, देयर इज nothing more better than Indian accent to actually feel yourself good to all the street side what you have really enjoyed in the finesse what best it could come at. So वाह that has been like city choices, और कुछ रीजनल जो एक्चुअली हम लिटरली एवरीडे लाइफ में करते रहते हैं टू लुक एट। अच्छा नेहा आपके फेवरेट सिटी और फेवरेट खाना कहाँ कहाँ आप कहाँ जाते हैं? सिटी अगर मैं बोलूँ तो गोवा इज टॉप फॉर मी, ऑन द वाह टॉप लिस्ट फॉर श्योर हाँ फॉर द फूड. हाँ And Goa is a paradise for food lovers, I'm telling you. हाँ And apart from Goa, I think Amritsar is my second choice, and third would be Purani Delhi for sure, because I go out for food walks with my husband only, हम्म, and some other people also, जैसे राजीव गोयल भी कराते हैं. So हाँ food walks is something I really admire. uh, if you talk about some really interesting things that I love to eat, is हाँ so in Kamla North Delhi mein, there is a Badri ki thali that you get. ओके Badri एक brand है basically, उनका एक बद्री थाली हलवाई है मिलती है. बहुत पुराना है Absolutely. हाँ Then there is a very known place in this Sector 14, Gurgaon. It's by the Amritsari, I think, kulcha stuffing they do. It's fantastic. You should have it. And Model Town में चाचा के छोले भटूरे is something that definitely when I am going to my parents' place, I make sure कि मुझे खाने को मिल जाए. I हम्म, really miss them. अब तो I think delivery भी हो जाती है, but जो वहाँ पे खाने का मजा है ना वो वैसे नहीं है, मतलब if you will say. एंड डेफिनेटली अगर आपको रात को एक बहुत अच्छा डिनर कहीं पे करना हो तो माय चॉइसेस विल बी सागा, ओके गुड़गांव या फिर चाइना क्लब. वाह अश्मिता आपके फेवरेट क्या है दिल्ली या शिमला कहाँ? शिमला, शिमला, एनी डे शिमला, मेरा दिल पहाड़ों में ही है. और तो मुझे मीठा बहुत पसंद है. सो बी इट हम्म, दिल्ली, शिमला, मुझे मीठा चाहिए. अगर हाँ, मुझे मीठा मिल जाता है तो मैं फिर सब सुन सकती हूँ, कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कैन हियर. मुझे जलेबी बहुत पसंद है. तो शिमला में तो आपको चाहे वो नत्थू हलवाई हो, या देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड लोअर बाजार, तो वहाँ पे बहुत सारी हलवाई हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी जलेबी, गुलाब जामुन सब मिलेगा. वो मैं बचपन से खा रही हूँ. अच्छा एंड तो आप शिमला जाओ तो दैट्स टेकन कि आपको आपको खाना ही है. दिल्ली में क्योंकि मेरा घर निजामुद्दीन में है, तो यहाँ से ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली बहुत पास पड़ता है. तो हाँ चांदनी चौक में वो जो जलेबी वाले हैं, आई थिंक महीने में वो एक बार तो मुझे देखते ही हैं कि आ गए वापस खाने के लिए. और मैं जाती हूँ और मैं अपने लिए लेती हूँ. अगर मेरे साथ कोई है तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको खाना है, तो लाइक कि एक ही खाऊंगा तो, या एक ही खाना है तो लाइक हाँ नहीं, आप अपने लिए अलग से लो, ये तो मैं खा ही जाऊंगी. आप अपने लिए मंगवा लीजिए. तो डेजर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट दिल्ली में ना एक गोवा ब्रांड है जो दिल्ली आया है, कॉल्ड फ्रोजन फन. ओके आइसक्रीम बहुत टेस्टी हैं. मेरे हाँ कोई भी दोस्त आते हैं, कहीं से भी आते हैं, मैं उनको लेके जाती हूँ कि प्लीज खाओ, हाँ क्योंकि मुझे पसंद है. सो चाहे हाँ उन्हें खाने में मेरा टेस्ट कभी लग जाए 19-20, बट मेरे डेजर्ट टेस्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता कि क्या है क्या नहीं. एंड ऑफ कोर्स अगर खाना खाना हो और खुद को जाना हो खाने के लिए, हाँ एंड नथिंग दैट is going to hamper that peace will always be Pandara Road. Pandara Road में वो जो भी है, मैं खुशी खुशी अपना दिल वहाँ ले जाऊंगी और रख लूंगी. लाइक ठीक है, मैं आई हूँ एंड आई ईट. एंड जब गुलाटी में नहीं मिलती रिजर्वेशन, क्योंकि नहीं मिलती, आपको 2 घंटा वेट करना हाँ। पड़ता है, तो आप वेट करते हो. अगर जो आपको उसके साथ में जो आपको जाके बाकी, सोनाली सोनाली का नाम लेना चाहिए ना वहाँ गुलाटीज में आपको मैं सब करती हूँ वेट, तो वो होता है कि हाँ है, करो वो इंतजार अपना है. बट दैट इज वन थिंग. ऑफ कोर्स अम्बावटा हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ द 2 प्लेसेस जिनके साथ मैं काम करती हूँ वहाँ पे, रू एंड चो, एंड दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है. इफ यू हैव टू ईट
Pan Asian, Vietnamese food. My friends from Bombay have come down to Cho to eat only because उन्होंने stories पे इतना देख लिया है. They're like क्या है ये? And there are people who are well traveled and they like the food. इन द Okay. सेम मैनर अगर मैं उनको वो पूरा पेरिस का फील दिखाती हूँ कि देखो अगर शादी करनी है तो ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए और ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, खाना ऐसा दिखना चाहिए, तो दे वांट टू गो टू रूम. सो मेरे लिए दीज प्लेसेस विल ऑलवेज हैव माय हार्ट कि नहीं, दे आर वेरी गुड एज ब्रांड व्हिच इज व्हाई दे आर देयर. पर्सनली खाना खाने में तो फिर मेरे डेजर्ट पहले आएगा फिर खाना आएगा. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप तीनों की ये सुनने के बाद ना मैंने इस रिकॉर्डिंग को कई बार देखना पड़ेगा, अपनी लिस्ट बना लूंगा और आप लोगों को बोलूंगा मेरे को यहाँ लेके चलो. जरूर आप Done, done, डेजर्ट done. कीजिएगा, मैं आपको डेजर्ट खिलाने ले जाऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इन तीनों ने मेरे को पिछले कई दिनों से एक धमकी दे रखी है कि आपने जो क्वेश्चन पूछने हो पूछ लेना, लास्ट में हम भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो और इन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मुझसे क्या पूछने वाले हैं, बट मैं तीनों को बता दूं कि 1 घंटा 25 मिनट ऑलरेडी हो गया हमको बात करते करते, और हमारा कोई भी शो 1 घंटा 5 मिनट से ऊपर कभी भी नहीं गया. बट मुझे बहुत मजा आ रहा है. सो द फ्लोर इज योर. सो नेक्स्ट 5 मिनट्स you can ask question. I think one question each would be fine. तो we can start with Sonali because Sonali सबसे ज़्यादा पीछे पड़ी थी कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना Yes, है. yes, yes, yes. So, sir, we have known you in the food industry only, and I got to know later after having an interaction with you of what do you do professionally. But with the in-depth knowledge that you have, दो questions है, but मुझे पता है मुझे एक ही allowed है. अगर आप थोड़ा सा sneak in कर दो तो मैं एक और पूछ सकती हूँ, हाँ हाँ, please. पूछ लीजिए पहले दोनों. पहले by the interest which I want to ask, दूसरा as a tip because I'm speaking to someone so big in HR, not to miss an opportunity. First question, being in the segment of food, आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हो जब आपको लोग इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर कहते हैं? आप पहले मुझे ये बताओ, हाउ डू यू एक्चुअली टेल पीपल दैट हु आर यू ऑन टू द प्रोफाइल? बिकॉज I have seen your word going out and how conversions have multiplied. We did one event in CP and you saw people came from different cities and people regard you. लोग अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं आते सर, हम मतलब we know it and how people drove for you. It was so much of love and connect. And अगर आपके social media पे भी देखो, आप हर city में there are people who are like who really swear by what knowledge you have shared with people onto the hidden gems. तो आप ये बताइए राजेश तारा जी कि आप अपने आप को कैसे इससे सेपरेट या डिस्टिंग्विश करते हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि नंबर 1, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ना कंटेंट क्रिएट करने के लिए कहीं नहीं जाता. माई जॉब टेक्स मी टू प्लेसेस and I love food. I want to taste good food. I want to write about that food. I want to talk about that food. तो मैं कंटेंट क्रिएट करने नहीं जाता, मैं फूड टेस्ट करने जाता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में लिखता हूँ. जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने आज तक एक भी पोस्ट नेगेटिव अपने सोशल मीडिया पे या ब्लॉग में नहीं डाली, कभी भी नहीं डाली. मैं कहता हूँ. और दूसरी चीज़ ये है, मैं कभी भी डिस्काउंट्स नहीं मांगता. मेरे को कोई कहीं जाता हूँ तो आई गो एनोनिमस एंड आई वांट टू पे एंड ईट. आई डोंट वांट फ्री फूड्स बिकॉज मेरी कंपनी मेरे काम के लिए मुझे अच्छे पैसे दे देती है, तो मुझे किसी से डिस्काउंट लेना अच्छा नहीं लगता है. और तीसरी चीज़ जो है, जो आपने बताया कि हर सिटी में मेरे दोस्त हैं, वो सिर्फ इसलिए और दूसरी सिटी से आए भी मेरे इसलिए, जो मैंने शुरू में बताया कि मुझे सिखाया गया था पब्लिक रिलेशंस इज इक्वल टू प्यार. सो मैं तो लोगों से प्यार करता हूँ बस. Very nice. Thank you, sir. And now the $1,000,000 question for the entrepreneurs in the room, for all of us. What is that one thing, like, which you would actually like to give, like a pro tip to us? We are, Neha is on her 8th year, I'm in my 5th year, and so is Ashmita. We all are growing each day. We experience so much. Being an HR, what is at times ना सर सिर्फ एम्प्लॉय हैंडलिंग के लिए या हायरिंग के लिए टिप्स मिलती हैं. हमारे सेटअप्स में ना इतनी स्ट्रक्चरल टिप्स नहीं होती हैं, मतलब उस लेवल पर द एक्सपीरियंशियल नॉलेज which you have. One thing which if you have to share with us as a learning from your experience,
into HR with a company structures like so bespoke like us, what would that be? मेरा सेम क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज Very वेरी nice. इंपॉर्टेंट. Very, Okay. very nice. देखिए, as HR, I am a bridge between the management and the employee. And as HR, I am not running for a popularity contest. I want my employee should be a happy employee and he should be taken care of so that he delivers the best. So मेरे लिए employee बहुत important है. I will give a benefit of doubt to employee first. But yes, there are some certain rules and regulations of the company which you have to be working between those four walls. But yes, as an HR, I would always look towards the development of employee, facilitation of that employee, felicitation that employee, and enabling him to deliver the best. और वही अगेन है कि अगर मेरा उसके साथ दिल से कनेक्शन नहीं है तो आर्टिफिशियलनेस तो कभी भी नहीं चलेगी. सो आई गिव यू एन एग्जांपल कि मेरे एम्प्लॉयज ऑल ओवर द कंट्री हैं, वो रात को उनमें से मैं ये कभी नहीं बोलता कि आफ्टर ऑफिस आवर्स में इसको बात मत करो. रात को 11 बजे भी कॉल कर सकते हैं, 12 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 6 बजे भी कर सकते हैं, और मैं कभी किसी की कॉल मिस नहीं करता. एंड वी हैव गॉट मोर देन 6000 एम्प्लॉयज अक्रॉस द कंट्री. Yeah. और अगर मैं किसी की कॉल मिस करता हूँ कि मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, even a worker in the factory knows my mobile number and can call me anytime. If I am busy, I will send you a message or you send me a message कि मैं so and so बोल रहा हूँ. सबका नंबर रजिस्टर भी नहीं हो सकता है कि मैं so and so बोल रहा हूँ. मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा. एंड आई मेक श्योर even if a peon is calling me, I will call him back. एंड मेरी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 80-90% लोगों को मैं बाय नेम जानता हूँ. एंड बहुत सारे केसेस में उनकी फैमिलीज के बारे में भी जानता हूँ. How wonderful. नेहा. मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. पहले तो अभिनंदन, स्वागत आपका हमारे शो में जहाँ हमने ये हिम्मत की कि हम आपसे बात करेंगे. तो मेरे 2 ही सवाल हैं आपसे राजेश जी. नंबर 1, ऐसी कौन सा एक फूड डिश है या कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है या कुछ भी है जिसके लिए आप ट्रैवल करना पसंद करो? पहला ये. हाँ. दूसरा, जो एम्प्लॉइज होते हैं, स्पेशली ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आपके पास यंग जनरेशन भी काम कर रही होगी आपको. what is the basic difference that you have seen between obviously the middle age employee and a young employee, let's say aged from 25 to let's say 35 or 30 also? दो So चीजें हैं. Millennium Gen Z category. Gen Z. Gen Z और छुट्टी होती है Gen Z. यार. या मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ. वन इज गुड फूड. गुड फूड के लिए मैं कहीं भी ट्रेवल करूंगा. और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सबको बता देता हूँ, मेरी माय जॉब टेक्स मी टू प्लेसेस. सो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पिछले 30 साल से. और ये सोशल मीडिया की इतनी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस ये है कि आपकी हर सिटी में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं 2-3 दिन पहले अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस डाल देता हूँ कि आप में से जॉन फ्री हैं. तो मेरा क्या है कि मैं चाहे 5 स्टार में रुकता हूँ, बट मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. तो 6:30 बजे मेरे होटल में मेरे को लेने के लिए आ जाते हैं, यहाँ मैं उनके बाद पहुँच जाता हूँ. तो सुबह 6:30 बजे से लेकर और 8 बजे तक मैं फूड एक्सप्लोर करता हूँ, वेदर इट इज स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट और एनीथिंग. वापस 8 बजे होटल में आता हूँ, शावर लेता हूँ, 8:30 बजे टैक्सी में बैठ के काम करने चला जाता हूँ. रात को 7-7:30 बजे वापस आए, अपना काम निपटाया, शावर लिया, 8 बजे फिर बाहर निकल गए, रात को 10 बजे तक कहीं भी फूड एक्सप्लोर किया, वापस आके सो गए, अगले दिन सुबह फिर यही रूटीन. सो फॉर गुड फूड आई कैन ट्रेवल एनीवेयर एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग, बट गुड फूड ऑलवेज अट्रैक्ट मी. ऐसा कुछ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट नहीं है. आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन ईट ऑन द स्ट्रीट, आई कैन गो टू 5 स्टार, आई कैन गो टू फाइन डाइनिंग, बट आई वांट गुड फूड. 1. 2, अगर मेरा कंफर्ट फूड पूछें तो मैं पंजाबी हूँ, और अगर मैं बोलूँगा कि राजमा चावल या कड़ी चावल, तो मेरा ऐसा नहीं है. लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर तो पंजाबी है ही नहीं है. राजमा चावल तो मतलब रिलीजियस है. मेरे हिसाब से मेरे अगर एक कंफर्ट फूड है दैट इज खिचड़ी. मुझे खिचड़ी आप किसी भी किस्म की खिला दीजिए, मुझे बहुत पसंद है. एंड आई कैन हैव खिचड़ी 3 times इन अ डे. आई लव इट.
अब आपने बोला है HR का क्वेश्चन, देखिए देयर इज ओनली वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज चेंज। वक्त बदल रहा है। आप और मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग अखबार पढ़ते थे, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। आज भी मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, मैं जब तक हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर या मैगजीन नहीं पढ़ रहा हूँ, दैट इज मी। आज का जो बच्चा है वो डिजिटल पढ़ता है, वो स्क्रीन पे पढ़ता है। मेरे को स्क्रीन में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो हाथ में पेंसिल होती है, मैं मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट। अब वो डिजिटल लोग स्क्रीन पे पढ़ते हैं। मेरे जब बॉसेस थे, उन्होंने रगड़ा दिया था कि मैं DTC की बस में भी ट्रैवल करता था और रोडवेज की बस में भी जाना पड़ता था, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वी हैव ग्रोन अप विद दैट। आजकल का बच्चा बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि वो अवेयर है। टुडे द जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स, दे कैन डिस्कस विद यू ऑन एनी डैम सब्जेक्ट। देयर नॉलेज इज मच मोर देन दैट, बिकॉज उसका एक्सपोजर है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट नॉलेज, यू हैव टू रिस्पेक्ट द एक्सपेक्टेशंस। आजकल का बच्चा, आप उसको बोलोगे कि आप रोडवेज की बस में जाओ तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप उसको बाहर लेके जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। आज एक वर्कर और प्यून का बच्चा भी MBA करना चाहता है, चाहे वो रोड साइड इंस्टीट्यूट से करना चाहता है, बट उसको पता है MBA क्या है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, शायद मेरे फादर को पता भी नहीं था कि MBA क्या होता है। सो वक्त बदल रहा है, तो एज एम्प्लॉयर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, हमको लेटेस्ट क्या है उसको समझना पड़ेगा और अपने को उससे अलाइन करना पड़ेगा। वेरी वेल सेड। मैंने तो अपने हाथ से फोटोकॉपी भी करी है, मैंने अपने हाथ से फाइलिंग भी करी है। आज आप बच्चे को बोलोगे तू फोटोकॉपी करके लेके आ, तो बोलेगा मैं लैपटॉप से कमांड देता हूँ, प्रिंट आ जाएगा, आप जाके उठा लीजिए। अश्मिता, आपका कोई क्वेश्चन है या पहले उसमें हो गया? हो गया, मेरे सब आंसर कर दी। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, we are already 1 hour and 36 minutes into this and we need to close this. This has been the longest and most interesting session. मैं ना बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ जो साइड पे लिख रहे थे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस आए हैं, बाद में कल परसों में जब टाइम मिले आप उनके आंसर्स अपनी तरफ से दे दीजिएगा। एंड आई मस्ट टेल यू, अश्मिता, नेहा, सोनाली, आई हैव नोन यू फॉर फ्यू इयर्स, बट बहुत मज़ा आया आज बातचीत करने में। इतनी बातचीत शायद हमने कभी भी नहीं करी। एंड बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, बट आई मस्ट थैंक स्नेहा सेकिया, माय फ्रेंड, और हमारी कॉमन फ्रेंड है स्नेहा, कि ये PR डे पे Neha, I was reading all the questions that she was sending, and actually Yes. we all are very thankful to Neha. तो स्नेहा सेकिया से बात करके मुझे, जब ये PR वाला हमने कंसीव किया था, तो मैं और स्नेहा बहुत दिन से ये बात कर रहे थे कि हमको PR के लिए कुछ करना है। तो आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू स्नेहा फॉर सीडिंग दिस थॉट इन मी कि हमको एक PR के ऊपर सेशन करना है, एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड। जो आप PR की बात कर रहे थे ना, द प्यार बिहाइंड इट, सो शी इज दैट हैज गॉट इनटू यस, शी इज द वन। और दूसरा ये है कि मुझे बहुत मज़ा आया आज बात करने में, और इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही, चाहे PR डे हो या ना हो, एक पार्ट 2 भी करना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि पार्ट 2 का भी कुछ काम करेंगे, एंड आपसे मिलते रहेंगे, और आप सबने मेरे को प्रॉमिस किया अपनी अपनी फेवरेट जगहों पे मेरे को लेके जाएंगे, तो स्नेहा भी साथ चलेंगी। डन। थैंक यू वेरी मच Ashmita, thank you very much Neha, thank you very much Sonali for this wonderful session. बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you sir, thank you so much। Thank you। तो ये थी 3 सुपर वुमेन अचीवर्स, और इतना मजा आया मुझे आज बात करने में। पहली बार हुआ है कि 1 घंटा और 38 मिनट्स हो चुके हैं, और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि इससे ज़्यादा बढ़िया सेशन कभी भी नहीं हो सकता था। मुझे बहुत मज़ा आया, और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही एक इसका पार्ट 2 भी करें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्नेहा सेकिया का, जैसा कि मैंने बोला, और मैं ऑल्सो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दोस्त राहुल वधावन का, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं इन सब चीज़ को रियलाइज़ करने में। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, और आप अपना ध्यान रखिएगा। जल्द ही हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।